Assalamu alaikum dear students. Nature in nurture and human diversity की second lecture के साथ I am Muhammad Hassan. In this lecture we are going to discuss the genetics, molecular genetics, epigenetics, and somehow the impact of the environment on the genes. We will start with some key interesting some facts about our genes. For example, we have come to know that for eye color, there are 16 different genes which are responsible for the eye color of the kids. However, two genes associated with eye color, two main ones, are OCA2 and HERC2 localized in chromosome number 15. So there are 16 different genes which are responsible for the eye color, black, bluish, yellow, greenish, and all those. So this variation is because of these 16 different genes. And there are a total of 378 genetic loci involved in determining skin color in humans. So skin color is being controlled in shaped by 378 genetic loci. Similarly, 80% of the height is determined by nearly 700 genes. The rest of 20% is due to the environment and the physical activity of that person. And there are at least 22 specific genes related to intelligence to IQ level. And type 2 diabetes is caused by both genetic and environmental factor. Uh, in the blood type is controlled by a gene. We call that gene ABU, which has three allies versions, A, B, and O. So here are some thing about if the father has the blood group and then the mother has the group. So what possibly it will be the kid's blood type. In case both have A, so the kid will have either A or O. If father has A and mother has a B, so there are now four choices: A, B, A separately, B separately, AB combinedly, and O then separately, and so on and so forth. So this is how we get our blood type from our biological parents. Now, if we come to thalassemia, which is a genetic disease which is become visible or result in when there are two recessive genes uh, combined in a kid from their biological parents. So they express there, and then the offspring may have uh, thus thalassemia minor one. For example, one of the parent who is two carriers. There are two carriers. One is the male and the female, and when they have offspring, so four offspring means the one will be severe thalassemic, and the two will be having carrier thalassemia trait in them, and the one has the possibility to be the normal one. Similarly, if we come to the albino or albinism, so if we have unaffected carriers and with they come across, so there is a chance that one among three would be an affected child. Similarly, if we comes to this blind color blindness thing, so it can be that the carrier one is the X and X in the circle. So we can have a grasp that how a person can be blind if one among their parent is a carrier uh, are an effective of the color blindness. So these are very interesting facts about the genes things. So let's start with heritability is. Heritability is the proportion of variation among individuals that can be attributed to genes. But why this variation is there? And depending on the range of the population and environment study. When we see that within a population, there is some variation about certain trait, for example, eye color,
hair color, and things like that. So we then attribute the amount of variation that is explained by genetic factors, and this explanation of variation is heritability, due to this heritability. So heritability is actually explaining that amount of variation, but it does not reveal how much specific genes contribute to the trait for any person. Rather, they talked in generalizable terms, which on average how many variation is there, and that is because of the genetic factor. So this branch of genetics is called heritability. There is a very famous and very extensive NASA twin case study. There was two astronauts, Scott and Mark Kelly, subject of a NASA twin study. One among them, Scott Wright, spent 340 days in the space while Mark was in Earth as a control subject, and they studied the both. And that was a very long study, as 340 days. So they were having much more detailed studies. I guess 11 studies were there, and they come across with the fact that Western studies demonstrated the resilience and robustness of how a human body can adapt to a multitude of changes induced by the space flight environment. Normally, we are using in the environment effect in on Earth, but this extensive study was planned to know what will happen to the twins, because they have the nearly same genetic genetics or genome. So what will be the impact of the environment, that is a space environment, on the persons? So that interaction that was on the environment and the heredity material, the DNA material, was uh, studied extensively, and there is the link where the details are there, and there are so many findings of that yes, impact environment do have an impact on the genetics, and that's how genes are muted. Gene mutation happen, and that's come in the form of muted genes, and there are certain changes in genes as well. So now we are going to distinguish what molecular genetics and what epigenetics is. Molecular genetics is the study of the molecular structure and the functions of gene, and particularly are in generalized way what gene is, how it is made up, how it developed, what is the structure, search for so many genes that together contribute complex traits. As we have discussed, that there are 700 genes which are there for a single trait, how the 700 genes are combining, interacting, and then what is expressed at the end reveals at-risk population for diseases, as we have discussed in the recessive genes, जहाँ पे कैरियर्स होते हैं, जिनके रिसेसिव जीन जिनके अंदर होते हैं और जिनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, वहाँ पे जेनेटिक डिजीजेस उनमें आ सकती हैं. So that is about the scientific study of the we can say the particularly biochemical study of the genes. So that is what we call molecular genetics. While on the other side, epigenetic is the study of environmental influence on gene expression that occur without a DNA change. There's no happening in DNA change in DNA, but the genes are muted, are expressed, or suppressed. Epigenetic marks from experiences and environmental factor. When a person goes through so many things, so how though her experiences are influencing his genes or her genes, and the environment around that person is how affecting his his genome. So epigenetic, if we take it more in a more detailed way, so it start basically, if we go for a detailed definition, is so that is epigenetic is the feedback loop between our genes and the environment. Our cells are constantly updating our genes on what they need to thrive.
by inputting the correct environmental variable of your genes, food included, we can create health, longevity, and live beneficial epigenetic marks for the next generation. Epigenetic coaching is all about optimizing the inputs to your system. So epigenetics is actually corresponding between the environment and the gene and resulted in the mutate and the variants of genes. So start के डीएनए जो है उसकी इसमें रेसिपी मौजूद होती है और डीएनए वो रेसिपी जो है tell that epigenetic marks means the outside the environment to tell the RNA how to use the recipe. Some are inherited and some are acquired. Some are there as in with the genes, the guidelines, and some is acquired from the environment. Our cells send signals to modify the epigenetic marks on our genes so that to produce the correct protein to the current environment. जिस environment में हम रह रहे हैं, cold weather है, hot weather है, so उसके accordingly हमारे जो DNA ने जो रेसिपी भेजी होती है, उस रेसिपी को जब RNA उसको मुताबिक जो प्रोटीन्स बनाता है, तो प्रोटीन्स जो है वो उस रेसिपी को उस एनवायरनमेंट के सिग्नल्स के मुताबिक एपिजेनेटिक मार्क्स के मुताबिक मॉडिफाई करके उसके मुताबिक जो है वो प्रोटीन्स बनाता है. RNA reads the DNA like a chef reading a recipe and helps assemble protein. इसमें जब ये RNA वो रेसिपी देख लेता है and then it start making the protein, and RNA and protein can be epigenetically modified directly, and that is how the RNA जो है nucleic acid और जो डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड है वो आपस में जब उसके रेसिपी वो पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंगली चेंजेस हो जाती है उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोटीन प्रोडक्शन होती है. सो इट कैन बी अफेक्टेड एपिजेनेटिकली, कैन बी मॉडिफाइड एपिजेनेटिकली और प्रोटीन्स बन जाते हैं. एंड cells send signals to modify the ingredients they receive to match the environment. So constantly चूंकि प्रोटीन बिल्डिंग होती रहती है, तो अगर पहली वाली प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट नहीं थी, then the signals to the RNA and then RNA pass it to the DNA that we need a change in that as per the environment. And then the environment inputs create, and then those protein builds our body, and then environment inputs create unique requirement for our cells. They act as sensors for what the current situation is. They might require different protein to work with the specific environment variable. So environment के inputs जो हैं वो बताते रहते हैं कि जी हमें कौन सी proteins चाहिए होती हैं, and all of our body functioning is connected with the proteins, the 22 type of amino acids and the lot of different types of protein. Environment में क्या है? Food है, mind state, exercise, air, drugs, stress, electromagnetic force, sleep, light, herbs, relationship, toxin, water, hormone. So all of these are, you can say, these are interaction with the environment, and we get that feedback from the environment to the cells, and then accordingly proteins are built, and then how our body is shaped. But it is not that and then when it is built in our body, then it may transform to our genome as well, and then we lift it for our offsprings so they can carry it from us. So epigenetics का मतलब ये है कि हमारे जो जीन मॉडिफाइड हो गए, म्यूटेशन हो गई उस एनवायरनमेंट में, सो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से फिर ऑफस्प्रिंग्स में जब वो चले जाएंगे, सो देयर विल हैविंग द mutated epigenetics genes है, वो genes उनके पास होंगे, and then again the cycle will be started when that kid will be in the environment. लेकिन उसके पास वो genetic molecules होंगे, वो genome होगा जो कि उसने अपने पेरेंट्स से लिया है, जो कि epigenetically modify हो चुकी हैं due to environment changes. And now comes to the very most debated phenomenon, that is natural selection and adaptation. What
uh, from evolutionary psychology perspective. What evolutionary psychology is? The study of evolution of behavior in the mind using principle of natural selection. Is Darwin postulated in the past on his observation that some of the species survived because of the survival of the fittest. Evolutionary psychology is doing things like same and study on those principles, based on those principles. So some variant arise from mutations, other from new gene combinations that occur at conception. कुछ ये है कि जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, जीन सप्रेस हो जीन्स जो है वो सप्रेस हो जाते हैं, या वो जो है म्यूटेशन होती है उनमें चेंज आ जाते हैं, या नई कम्बिनेशंस बनती हैं. तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट म्यूटेशंस को और न्यू कम्बिनेशंस डेवलपमेंट को देखती हैं. और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट फोकस मोस्टली ऑन व्हाट मेक्स अस सो मच अलाइक एज ह्यूमन. और उनकी फिर सबसे बड़ी ये है कि हम एक दूसरे की तरह क्यों हैं, अलाइक क्यों हैं एज ह्यूमंस, कि जी एक जैसे भी क्यों हैं और हमें जो डिफरेंसेस है वो भी क्यों हैं. एंड व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल? इट इज द प्रिंसिपल दैट इनहेरिटेड ट्रेड that better enable an organism to survive and reproduce in a particular environment will, in competition with other trait variations, most likely be passed on the succeeding generation. जिस तरह उन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो ऑर्गेनिजम्स पे है, यहाँ पे ये है कि जो हमारे इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि गिवन एनवायरनमेंट में हम सरवाइव कर सकें, हम प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली उसको देख सकें. देन वी कैन से उसके मुकाबले में हम अच्छे तगड़े हो जाते हैं दूसरे वेरिएशंस के मुकाबले में. सो वी हैव दैट गुड ट्रेड्स, जिसे आप कहते हैं कंपीटिंग traits जो हैं जिस environment में हम रह रहे हैं. So then accordingly we can cope with that, and we can cope with that environment and we can survive that environment. So how it works, it begins with the species genome, which contains a variety of versions of genes that shape traits. हमारे genes में जैसे हमने कहा different जीन्स होते हैं, जीन्यूम में 20,000 से 25,000 के करीब जीन्स हैं जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शेप करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं. उसमें से कुछ कंडीशंस मेक इट डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल विद सम ट्रेट्स, सम वर्जन ऑफ दोस जीन्स टू सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस. उनमें से कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं या नई कम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऐसे बन जाती हैं कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पाती. वो ट्रेट्स जो हैं वो हमारे कमज़ोर पड़ जाते हैं, एंड दैट बिकॉज जो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं वो रह जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो कमज़ोर है वो रह जाएंगे, जो रिमेनिंग है दैट इज व्हाट वी कॉल द फिटेस्ट वन. सो वो दैट विल बी गार्ड सेलेक्टेड एंड दैट व्हाट वी कॉल नेचुरल सिलेक्शन. कि जो फिटेस्ट है, जो एनवायरनमेंट के साथ कोप कर सकते हैं, जो पॉपुलेशन में, जिस गिवन पॉपुलेशन में cope करेंगे, survive करेंगे, that will be there and the rest will be eradicated. For example, humans share a common genetic profile of gene, as we discussed in the first lecture as well, that we have 99.99% identical genetic makeup, and that what we call genome. Only 0.01% hold important clues about the causes of diseases and the differences. So that means we have a universal moral grammar shared across culture differences. Some parts of our prehistoric genetic legacy may be mismatched with our contemporary lifestyle. जो हमारे पुराने कुछ legacy है, genetic legacy है, जो हमें मिल गई है, तो वो हमारे contemporary lifestyle के साथ मिसमैच्ड है, जिसकी वजह से उस जमाने में जो जेनेटिक बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक अच्छे नहीं थे वो रह गए हैं, और हम जो हैं जो नए म्यूटेटेड जीन्स के साथ आगे आए, नाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ओवर देयर. इन व्हाट वेज might this be problematic? Because when we are studying कि जी वो इतने बड़े लंबे थे, वो इतने तगड़े थे, वो ये थे, वो थे, so वो environment की वजह से, उनकी वजह से वो survive जो कर रहे थे वो उसकी वजह से थे. And when environment was changing epigenetically, वो जो modification हो रही थी genes में वो result हो रही थी. For example, male-female differences in mating preferences.
एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कैसे एक्सप्लेन करती है. मैन प्रेफर्स वुमेन विद साइंस ऑफ फ्यूचर फर्टिलिटी बिकॉज हिस्टोरिकली मैन is concerned for his survival by his offsprings. So जब वो survival of his offsprings पे है, so he is looking for such a woman who is narrow waist and fuller figure, age of peak fertility, so that he can be survived by his offsprings, or if he die. While women, on the other hand, prefer those men who are loyal, who are having loyal behavior and who have physical, social power and resources. Uh, but might natural selection have resulted in mating preferences? Because now in those cases, because natural selection में men की जो appropriation है, वो चाहते हैं main choices optimize the chance of producing offsprings. वो कहता है कि ऐसे मेट मुझे मिल जाए जिसके साथ मैं अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकूं, रिप्रोडक्शन हो जाए, मेरे ऑफस्प्रिंग्स हों, जिसकी वजह से मेरी जो सर्वाइवल है, मेरा जो नाम है वो रहे. Female choices seek to ensure offspring survival. Males are more concerned with the quantity and their ability, जबकि फीमेल जो है वो उसके सर्वाइवल के लिए, जो ऑफस्प्रिंग की सर्वाइवल है, कि इनकी नर्चरिंग अच्छी हो, इनका तरबियत अच्छी हो, इनको सारी चीजें मिलें. So that why we can conclusively say that men choose widely, women choose wisely. Men are more about quantity in offsprings, while women are more about the quality of the offsprings. But there are so many critiques on the evolutionary perspective. That is, most psychologists agree that natural selection prepares human for survival and reproduction. But there are critiques, and that is more immediate explanation for results are better understand based on social learning theory. हम कहते हैं कि जी इस environment में हमारे पास ये characteristic हमने develop किए, gene mutation हो, ये हुआ, gene के नए development बन हुए, but these can be attributed to the social learning. हमने देखा कि जी भाई पुराना फला बंदा जो है वो survive कर रहा है because of this, so हमने वो चीजें learn करना शुरू की, society ने as a whole उसको learn करना शुरू किया. So that's why we are not because of the decision made by our distant ancestors. Now we are here by our own social learning and our forefathers, the nearer one. Social consequences of explanations are problematic because we cannot say okay, why that person is so much social and why this is not. Some minor ones are also got survived. Some traits and behaviors are difficult to explain by natural selection. दाव के वो ज़्यादा effective नहीं रह पाते, लेकिन still those are there. So we cannot explain कि जी ये तो weak रहे हैं, तो why these were not abolished रहे, क्यों खत्म क्यों नहीं हुए? नाउ वी कम्स के जी जो हमारे जैसे हमने कहा कि जी सोशल लर्निंग भी है, तो सोशल लर्निंग की वजह से हमारी ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल वी कैन से नेचर एंड नर्चर interacts to shape synapses to make well-used brain pathways work better. Unused connection are pruned away. हम जितना अपने ब्रेन को यूज करते हैं, सो जो पाथवेज मेमोरी रिकॉलिंग के लिए, मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज होती हैं, वो दैट बिकम मोर वर्किंग, वाइल दोज जो कि अच्छी नहीं होती और जिनको हम यूज नहीं करते, वो pruned away, वो खत्म हो जाते. फॉर एग्जाम्पल certain abilities are not used, they will fade. फॉर एग्जाम्पल a person is a left handed, सो वो उसका राइट हैंड जो है वो इतना ज्यादा फिर यूज नहीं होता. सो उसकी वजह से जो हम समझते हैं कि इसको लेफ्ट हैंड में इसको ज्यादा ताकत का एहसास, इस तरह हम राइट हैंडेड लोग जो हैं वो लेफ्ट हैंड से वो नहीं कर पा रहे होते जो हम राइट हैंड से करें, बिकॉज वी आर यूज्ड टू डू थिंग्स विद दिस राइट हैंड थिंग्स. सो सिमिलर थिंग्स हैपन विद अस, और हमारे उस लर्निंग प्रोसेस की वजह से जो हमारी ब्रेन है और हमारे जो नर्व सिस्टम है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट गॉट इवॉल्व. फॉर एग्जांपल there was 14 to 16 repetition of this basic experiment, जिसमें एक रेट को एक छोटे से एक चूहे को एक छोटे से खाने में बंद कर दिया गया और दूसरा वन there was a bigger one.
बिगर वन में चूंकि इसकी इंट्रैक्शन ज्यादा हो रही थी, देयर वाज enriched environment, there was so many sensory inputs to that person, to that rate, and it was not in the other case. तो इस तरह वहां पे जब देखा गया कि जो आम एनवायरनमेंट में था उस रेट का जो ब्रेन किया गया और उसका जो कि एक इनरिच एनवायरनमेंट में, तो इनरिच एनवायरनमेंट वाले के ब्रेन जो है ना वो मोर फंक्शनल था और मोर ऑपरेटिव था. So then comes KGH. Then we have to blame our parents and fear for their influence on us, or to give them credit. So Freudian psychology और हमारी society usually जो है वो bad mothering पे बात करती है, लेकिन and the largest parenting effects occur at the extremes. कि जी बहुत ज्यादा हो तो कहते हैं ये लाडला था, ये बिगड़ गया, तो ये माँ बाप की वजह से बिगड़ा. लेकिन जो अगर स्टडीज हैं उसमें ये है कि हमारे जो 10% चिल्ड्रन के डिफरेंसेस हैं ये हमारे पेरेंट्स के आते हैं. पीयर्स के मामले में अगर हम देख ले सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस, क्योंकि पीयर्स एक दो नहीं होते, पेरेंट्स आर टू एंड वी कैन ट्रेस देम वेरी इजीली, बट इट इज नॉट द केस इन द पीयर्स. हमारे जो इनफॉर्मल ग्रुप, सबसे पहले गली मोहल्ले वाला, फिर स्कूल वाला, फिर उसके बाद कॉलेज वाला, एंड सो एंड सो फोर्थ. अपैरेंट कन्फर्मिटी कुड बी अ सिलेक्शन इफेक्ट, बिकॉज जिनके साथ हम उठते बैठते हैं उनके हाँ में फिर हाँ मिलाते हैं, वो जैसा करते हैं वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन वी गॉट those characteristic, those things which are and our peers. Interaction with peers can teach new social skills, because वो किस तरह बात करते हैं, कितने वो social हैं, so that influence us. So Gardner in 1998 studies concluded parent and peers are complementary influences. They both are influencing us in a very proper way. For example, parents are influencing, have more influence on education, career path, cooperation, self-discipline, responsibility, charitableness, religion, interaction, style with authority figures, etc. क्योंकि जो पहली ग्रोथ हमारी हो रही थी पर्सनालिटी की वो विद इन फैमिली होती, जहाँ पे पेयर्स ने अभी आना नहीं होता. वहाँ पे जो इनिशियल हमारे जो psychic development होती है वो उधर होती है. जबकि peers have more influence on learning cooperation skill, learning the path to popularity, choice of music and other recreational things, and choice of clothing and other cultural choices, good and bad habits. Because यहाँ से हमारी जो social learning है, proper social learning यहाँ पे होती है कि किसके साथ cooperate करना है, कैसे cooperate करना है, compete क्यों करना है, पॉपुलैरिटी कैसे गेन करनी है, रिक्रिएशनल चॉइसेस हमारे कैसे बन जाते हैं, क्लॉथ्स बिकॉज वी से कि जी ये क्लॉथिंग इज मोर एक्सेप्टेबल, दिस वन इज नॉट, सो एंड थिंग्स गोज ऑन, एंड हैबिट्स हम उठा लेते हैं अपने पेयर्स की. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन, जिसमें हमने ये देखा कि व्हाट इज molecular genetics, what is epigenetics, epigenetics किस तरह फंक्शन करती है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की हमने बात की, और नेचुरल सिलेक्शन की को हमने समझने की कोशिश की फ्रॉम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, और उस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी देख लिया, और आखिर में हमने जो इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स हैं और पीयर्स का है वो हमने देखे कि हमारे साइकी पे उनका क्या इम्पैक्ट आता है. सो दैट वाज ऑल, एंड द रेस्ट विल बी डिस्कसिंग इन द लास्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज. टिल देन, अल्लाह हाफिज.